A fast-growing travel platform delivered its best ever Q1 with 73% revenue growth driven by rising use among Gen Z and solo women. New tools like visa refunds and smart features are also cutting costs and boosting bookings. Meanwhile, a hospital chain in Western India hit record delivery volumes and improved margins, backed by new beds across Thane, Pune, and Indore. Both companies are growing steadily through focused expansion. Hi, and welcome to another exciting edition of Noisemaker, जहां हम चीजें सिंपल रखते हैं, फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती, but have strong potential to deliver in the long run. I am Nishant, Equity Research Analyst at Desvelado Advisory, और आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जो अपने बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही है, and if current trend remain intact, they might continue to grow even further. But before jumping to the companies, let's see the disclaimer first. Any discussion, facts, or writing provided are for informational purposes only and do not constitute a buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. So, let's start with the first company. The first company that we are going to cover today is Travenues Technology Ltd, which basically operates online platforms for providing information and booking services to the travel industry. इसके अलावा ये अपने कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की सर्विसेज भी ऑफर करता है. Basically, in Q1 FY26, the company reported its strongest quarterly performance yet. Revenue stood at rupees 314.5 crore, मतलब 73% का growth over the same quarter last year. Profit before tax भी 76% बढ़ा, reaching rupees 28.7 crore. The total value of booking also reached rupees 4,644.7 crore, a 55% jump, majorly driven by flight और bus bookings में 81% का surge और train bookings में 30% का boost. A deep dive into user trend shows कि Gen Z ने train bookings में 45% growth दिखाया, while solo women travels की booking में 123% का rise देखा गया. The company also launched new features to address friction points जैसे visa rejection refund, ₹8,000 तक प्राइस लॉक ऑप्शन और ज्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट्स मेथड. ऑपरेशन साइड पर टूल्स अब 60% से ज्यादा कस्टमर कॉल्स ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं और मार्केटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 99% तक रिड्यूस हो गई है, विद सिग्निफिकेंटली बूस्ट मार्जिन्स. Now looking ahead, the company aims to scale up its travel guarantee service, जहां wait listed ट्रेन पैसेंजर्स को ऑल्टरनेटिव डिस्काउंट फ्लाइट्स या बसेस मिलते हैं. कंपनी का नेक्स्ट टारगेट है क्रूशियल ट्रैवल होटल बुकिंग और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, उन चैलेंजेस को सॉल्व करके जो लोगों को अभी तक रोक रहे हैं. Now coming to the numbers, in FY25 the company reported a solid 24.3% year-on-year growth in revenue from operations, which rose from 1283.8 crore in FY24 to 1595.9 crore. The company's momentum remained strong throughout the year, with Q4 revenue at rupees 284.1 crore, followed by a further increase to 314.4 crore in Q1 FY26. EBITDA for FY25 stood at rupees 426.5 crore, reflecting an EBITDA margin of 26.7%, largely consistent with the previous year's 26.8%. Net profit for the year reached rupees 313.9 crore, delivering a net margin of 19.6%. Now, talking about the company's outlook, the company is now expanding its travel guarantee feature, a service that helps waitlisted train passengers shift to flights or buses. The goal is to drive higher adoption, which could lead to better margins and an increase in average revenue per user over time. साथ ही कंपनी इंश्योर कर रही है कि ये सर्विस ज्यादा लोगों तक efficiently पहुंच सके without friction. Along this, it's working on strengthening its hotel booking vertical. The team is focused on solving three main problems: building trust, expanding hotel inventory, and enhancing content quality. ये गैस फिल होने के बाद प्लान है कि होटल्स को अपने 83 million monthly active users को क्रॉस सेल किया जा सके डायरेक्टली विद इन द प्लेटफॉर्म. These initiatives are built to keep users engaged and generate more revenue per customer. अब यूजर्स खुद ही प्रीमियम सर्विस चूज कर रहे हैं, अब जैसे प्राइस लॉक, फ्री कैंसिलेशन और ट्रैवल गारंटी. इस वजह से पिछले 2 साल में एवरेज ईयरली स्पेंड पर यूजर ₹6,537 से बढ़कर ₹9,705 हो गया है. अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है तो प्लेटफॉर्म यूजर्स के ट्रैवल बजट का बड़ा हिस्सा कैप्चर हो सकता है और ऑप्शनल एड्स ऑन से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है.
Now, let's move to the second company, Jupiter Lifeline Hospitals Ltd, a multi-specialty tertiary and quaternary healthcare provider based in the Mumbai metropolitan region (MMR) and Western India. The company witnessed a sharp rise in delivery volume, reaching 96.3% compared to 61.1% earlier and a monthly average of 85.1%. Yes, grow strong FY25 परफॉर्मेंस की वजह से पॉसिबल हुआ है और कंपनी का गोल है 2500 बेड्स तक एक्सपेंड करना. रेवेन्यू फॉर द ईयर grew 17.5% to rupees 1261.5 crore. EBITDA increased 22.5% and profit climbed 9.6% to rupees 193.5 crore. एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी 10.4% से बढ़कर rupees 60,600 हो गए हैं. ऑक्यूपेंसी लेवल में भी इंप्रूवमेंट दिखा है. थाने at 72.1%, Pune at 65.5% and Indore at 54.9%. To meet growing demand, the company is now investing in new hospitals, including a 500 crore facility in Pune, a 250 bed unit in Dombivli expected by Q1 FY27 and another setup in Mira Road. कंपनी थाने और इंदौर की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को भी अपग्रेड कर रही है, जहां यूटिलाइजेशन ऑलरेडी काफी हाई है. This expansion is being funded by rupees 600 crore in available resources, rupees 325 crore from new debt, and rupees 275 crore from internal reserves, plus a rupees 350 crore loan facility, जिसमें से rupees 75 crore already draw हो चुका है. Importantly, there is no equity dilution planned. यानी ग्रोथ का पूरा फोकस है इंटरनल accruals and low cost borrowing पे, ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल रहे. As new facilities become operational, the company is well positioned for steady, sustainable growth in the healthcare space. और जैसे स्केल बढ़ेगा, मार्जिन और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होने की संभावना है, की एक्सपेक्टेशन है. Now, talking about the financial year FY25, the company posted a healthy 17.5% year-on-year revenue growth, with operating revenue increasing from 1073.4 crore in FY24 to 1261.5 crore. EBITDA for the full year stood at rupees 296.6 crore, reflecting an improved EBITDA margin of 23.5% compared to 22.6% in FY24. Net profit for FY25 reached rupees 193.5 crore, showing modest growth from rupees 176.6 crore in the previous year. Though net margin softened slightly to 15%, down from 16.1% in FY24. Going forward, in Thane, the company has started replacing some of its low-margin economy wards with high-value facilities like operating theaters, imaging units, chemo suites, and OPDs. ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी ऐसे सर्विसेज पे फोकस कर रही है जो ज़्यादा रेवेन्यू पर बेड जनरेट कर सके और एक बेटर पेशेंट मिक्स अट्रैक्ट हो. द आइडिया बिहाइंड दिस शिफ्ट इज टू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स अ मोर प्रॉफिटेबल ऑफरिंग दैट इम्प्रूव्स ओवरऑल मार्जिन्स. थाने हॉस्पिटल को अब UDCPR नॉर्म्स के अंडर रेगुलेटरी क्लियरेंस का वेट है, जिससे एक एडिशनल फ्लोर बेड बिल्ड किया जा सके. अगर अप्रूवल मिल गया तो ये एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही होगा, मतलब मेजर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड किए बिना मार्जिन्स और एनहेंस का होने की एक्सपेक्टेशन है. ये एक स्मार्ट मूव है क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्ड करेगी विद मिनिमल इंक्रीमेंटल कॉस्ट. And when it comes to long-term strategy, the company plans to remain focused on Western India and prefers greenfield projects. ये अप्रोच एग्जीक्यूशन रिस्क को कम करता है और उन मार्केट्स में ग्रोथ इनेबल करता है जहां कंपनी का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लोकल अंडरस्टैंडिंग है. Now, let's review some of our PFC that we have. Gabriel India Ltd up 24.8%, Bondada Engineering Ltd up down 4.8%, EMS Ltd down 1.3%, Garware Technical Fibres Ltd up 6.3%, and Enviro Infra Ltd up 23.7%. Now, you can scan the QR that you are seeing on your screen to get all the previous companies that we have covered in our Noisemaker section for your decision making purpose. Now, let's review some of our let's see the summary of our today's recent filing, which includes late Travenues Technology Ltd. The company has reported its best ever performance in the first quarter of Q1 in the first quarter of FY26, with revenue rising to rupees 314.5 crore, a 73% jump from last year, and profit before tax increasing by 76% to 28.7 crore. Jupiter Lifeline Hospitals Ltd, the company's delivery volume surged to 96.3% versus 61.1% previously and 85.1% monthly average, driven by strong FY25 results and visible progress towards its 2,500 bed capacity target.
So that's it for today's edition of the Noisemaker. अगर आपको ये breakdown अच्छा लगा हो तो informative लगा हो तो you can scan the QR to read the full report. We will be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed and stay ahead.